भारत की सशस्त्र सेना के इतिहास में 4 दिसंबर का दिन बहुत खास है। आप जानते ही होंगे कि 4 दिसंबर भारत की जल सेना यानी नौसेना का दिन है। इस दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग यह अनुमान लगाएंगे कि शायद इस दिन भारतीय नौसेना अस्तित्व में आई होगी, इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है। पर जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के पराक्रम का प्रतीक है, जो हमें भारत की जल सेना की शक्ति और क्षमता की याद कराता है, एहसास कराता है। इसी तारीख को यानी 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करते हुए कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था, जो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी के समान था। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और नेवी डे के मौके पर आज डीडी दस्तावेज में भारतीय नौसेना के इतिहास, उसकी ताकत और उसके पराक्रम की बात करेंगे। वैसे तो 1971 के युद्ध में हमारी सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने जबरदस्त काम किया था, लेकिन भारतीय नौसेना का काम काफी अलग था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने एक ही रात में पाकिस्तान के 3 जलपोतों को तबाह कर दिया था। इस हमले के लिए नौसेना अपनी जो मिसाइल फिट पोत थी, उनको कराची पोर्ट के बिल्कुल करीब तक ले गई थी। भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन था ये। पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी पीएनएस गाजी का खात्मा पाकिस्तान के लिए वज्रपात जैसा था। पाकिस्तान की तरफ से गाजी को भेजा गया था कि भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत को खोजकर तबाह करने के लिए, लेकिन इस चक्कर में गाजी खुद तबाह हो गई। दरअसल पीएनएस गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। उस समय गाजी का जवाब दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था। इसके अलावा वो इकलौती पनडुब्बी थी जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए 11,000 समुद्री मील दूरी तय करने की क्षमता थी। तो आइए प्रसार भारती आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की विजय गाथा तो है ही, साथ ही इस युद्ध के बाद हमारी नौसेना ने कैसे सीख लेकर खुद को मजबूत किया। Even as the Leander program was gathering momentum, the 1971 war broke out. The Indian Navy tasted its first blood when it sank PNS Ghazi, the Pakistani submarine, off Vishakhapatnam on the night of 3rd December and followed it up with an attack on the Karachi harbour the next day. So successful and devastating was this attack by her OSA-class missiles and a large task force that ever since then, the day, 4th December, is observed as Navy Day. One of the lessons of the 1971 war was, it was for the second time only that surface-to-surface missiles were used in a war, and in a way it transformed naval warfare at sea. In those days we had only small missile boats which didn't have much endurance, which carried missiles. We realized
that to be effective, we must have platforms which will be able to keep at sea for a long period and carry missiles, and hence the evolution of the original Leander class frigate into what we now call the Godavari class frigate. It is a ship which is basically on the Leander hull, but modified and stretched by us, but with a totally different weapon package. The 125-meter-long Godavari frigate is basically a stretched and broad-beamed offshoot of the Leanders. It is the only ship of its size in the world which can carry 2 large Sea King helicopters on board, equipped with Soviet missiles, Italian anti-submarine torpedoes, guns and radars also from the Soviet Union, and Indian and Dutch command control systems. The Godavari is probably the most international ship in the world. उन्नीस सौ 71 में पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला बोल दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसी के साथ 1971 के युद्ध की भी शुरुआत हुई थी। तब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाना बनाया था। नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी से तबाह कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की पीएनएस गाजी पनडुब्बी जल में ही दफन हो गई। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इससे लगी आग 7 दिनों तक जलती रही। भारत के इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। इस अभियान में आईएनएस विक्रांत ने खूब वाहवाही बटोरी। नौसेना की इस कामयाबी ने मुक्ति संग्राम में भारत की विजय में अहम भूमिका निभाई। 1971 ही नहीं बल्कि 1965 के युद्ध में भी नौसेना ने खूब बहादुरी का प्रदर्शन किया था। Emergency Bravo, appreciate enemy submarine area. Assume main state 2. Assume main state 2. Enemy submarine area. Unknown aircraft on bearing 215. 15 kilo closing. Forward. Forward primary. Aft secondary. Engage. Its strike capability is backed by its highly effective air force. With the new fighter aircraft MiG-29K joining its ranks, the command's firepower has increased tremendously. Anti-aircraft beyond visual range missiles, guided anti-ship missiles, smart guided bombs and rockets make the fighter aircraft a force multiplier. The Navy's firepower is now more potent than ever. Indian Navy's strike capabilities and dominance in the region is aided to a large extent by its aircraft carrier, the legendary INS Virat. With a displacement of 28,700 tons, it is one of the largest vessels in the Indian Navy. Mission briefing for attack on enemy fighter establishments at 1700 hour. The Eastern Naval Command is ever ready to snub any aggressive move on India's eastern front. A composite force with multifarious capabilities, the Eastern Fleet is a silent, reassuring presence. It provides security to the vital installations, resources, and protects the economic interests in the exclusive economic zone. Guided missile destroyers, frigates, missile corvettes, and anti-submarine vessels add to its firepower. Whatever be the threat, it is always ready to give a knockout blow. The Indian Navy's range of combat platforms is indeed lethal. From submarines to warships and fighter aircraft, it's the men behind the machines that give a cutting edge to the Indian Navy. They are complemented by a group of highly motivated personnel, the elite Special Forces.
To observe a special forces personnel in action is inspirational. To be one is exceptional. The battle-ready naval warriors get their grounding from the best in the business. The Southern Naval Command imparts nerves of steel to the new entrants. They get well versed in all facets of surface, subsurface and aviation techniques. Life in the Navy is not just about a job. The on-the-job training opens up exciting opportunities. Name the challenge. You get trained to meet it. The Southern Command gives the men in white specialized training, whether it is about naval missile or gunnery system. उन्नीस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस युद्धपोतों और सबमरीन्स के बलबूते दुनिया की 4 सबसे शक्तिशाली जल सेनाओं में शामिल है। सीमाओं पर चारों दिशाओं में देश की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका काफी अहम है। सीमाओं पर रक्षा के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भारतीय नौसेना दिन रात काम करती है। आज आधुनिक सुविधाओं से लैस भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया जानती है और मानती है। समुद्री रास्तों से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाने में नौसेना की भूमिका काफी अहम है। भारतीय नौसेना के प्रसार पर प्रसार भारती आर्काइव से देखिए ये खास विश्लेषण। Sea terror is on the rise, with militants mounting attacks from the waters. As the country is a large importer of energy, the Indian Navy has to ensure that the sea lanes are safe. The Indian Navy also contributes to international maritime security in a big way. Indian warships patrol the pirate-infested Gulf of Aden off the Somalian coast. Threat neutralized, mission completed. India has always demonstrated it is committed to collective good in the international waters. The Indian Navy engages with major maritime powers in joint naval exercises. Bilateral exercises with the navies of the US, UK, Russia, France, Japan, Singapore, Brazil and South Africa, to name a few, give the Indian Navy a cutting edge. The Indian Navy has always participated in them with professionalism. Moreover, to enhance our footprint in the vital sea lanes, the Indian Navy has entered into bilateral treaties with friendly navies to replenish the ships on the seas. A world-class power now has a world-class Navy. As the geostrategic situation in the Indian Ocean region undergoes rapid changes, the Indian Navy's mandate is clear-cut: to safeguard the country's maritime interests, detect potential threats, and nip them in the bud. The Navy's vision is crystal clear, providing matching maritime security for a galloping economy. Live up to the nation's aspirations, follow a well-charted growth plan. Proudly carrying the colors of a resilient economy, the Indian Navy surges ahead. भारतीय नौसेना का इतिहास बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में नौसेना का फिर से पुनर्गठन हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है। यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में बहुत अहम भूमिका निभा रही है।
साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है। वैसे तो नौसेना का इतिहास पौराणिक काल से ही माना जाता है। भारत की अगर बात करें, सिंधु सभ्यता से लेकर आजाद भारत यानी हिंदुस्तान तक के सफर में भारतीय नौसेना विश्व की ताकतवर सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारतीय सेना के सामुद्रिक अंग भारतीय नौसेना 400 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षक है, वाहक है। देखते हैं भारतीय नौसेना के इतिहास की एक झलक। From the times of the Indus Valley civilization down the ages, we found that navies had their own distinctive and invaluable role not only for protection of the country but also for promoting maritime interests. Today, the Indian Navy is a well-balanced three-dimensional force. The Navy has become the one truly strategic service in today's environment. A service that has the most sophisticated missile-capable warships, aircraft carriers, minesweepers, advanced submarines, and the latest aircrafts in its inventory. The Naval Museum attracts visitors not only from India but also from different parts of the world. People who are curious to know the remarkable development that naval tradition has had in our own country. Every chapter of Indian naval history interests them. Shipbuilding activity in the country as also training and support facilities in the Navy are also being modernized. That is the picture that one gets in the Navy Museum. Many of the warships that the Indian Navy has are of independent indigenous design. These ships have been constructed in Indian shipyards. No wonder these ships compare well with the ships of similar capacity and capability constructed by advanced countries of the world. The Indian naval forces are maintained and supported by modern facilities encompassing the state-of-the-art technology, a subject of tremendous public interest. आजादी के बाद 1950 में नौसेना का फिर से गठन हुआ था और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में देश के सामने उस वक्त बड़ी चुनौतियां थीं, जिनमें भारतीय सीमाओं को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने अपनी नीतिगत व्यवस्थाओं का विस्तार करते हुए अपनी ताकत को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। भारतीय नौसेना के बेड़े में चुनिंदा सबमरीन्स को एक के बाद एक शामिल किया गया। इसके बाद सोवियत रूस से आयातित कई मारक क्षमताओं वाली मिसाइलों को भी इसमें शामिल किया गया। आइए देखते हैं कैसे भारतीय नौसेना को मजबूती मिली। In 1965, India and the USSR signed a package deal for the purchase of a Foxtrot-class submarine squadron, training of personnel in the Soviet Union, and technical assistance in setting up training and shore facilities at Visakhapatnam. India's first submarine, INS Kalvari, was commissioned on 20th December 1969 to give the Indian Navy a truly three-dimensional character. Around the same time, it was decided to build a general-purpose frigate at the Mazagon Docks, Bombay. While shopping for a design, the Indian Navy opted for the British Leanders, the latest in the market then, thus making India's first indigenous effort a major modernization attempt as well. INS Nilgiri, the first of the 6 Leanders, was launched on 23rd October 1968. It took almost 4 years to build.
आजाद भारत में भारतीय नौसेना के सबसे पहले चीफ थे वाइस एडमिरल R.D. कटारी। उन्होंने 1958 में अपना पद ग्रहण किया और फिर वो वक्त आया जब भारतीय नौसेना का रंग रूप सब कुछ बदल गया। नौसेना के बेड़े में उस समय के एक से बढ़कर एक युद्धपोत मालवाहक जहाज शामिल किए गए और 60 के दशक तक आते आते भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह दुश्मन के हर मंसूबे का करारा जवाब दे सके। प्रसार भारती आर्काइव से आइए अब आपको दिखाते हैं 60 के दशक की एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नौसेना ने अपने सालों का सफर कैसे तय किया। The Indian Navy continued to be headed by a British officer for 8 more years, till 22nd April 1958, when Vice Admiral R.D. Kataria became the first Indian Chief of Naval Staff, making it a truly Indian service. Even as the Navy was acquiring an Indian character, a second dimension was given to her, a naval air arm. The future of the naval air arm was further secured with the commissioning of the former British aircraft carrier HMS Hercules as INS Vikrant into the Indian Navy on the 4th of March 1961. But the 1965 Indo-Pak War highlighted the absence of the crucial third dimension of the Indian Navy, the submarine arm. Forays by Pakistani ships into Indian waters were effectively deflected by surface ships. भारत के गणतंत्र की अर्ध शताब्दी के मौके पर भारत ने पहली बार साल 2001 में नौसेना की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की। इस ऐतिहासिक आयोजन में करीब 20 मित्र देशों के 80 जहाजों ने भाग लिया। भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय था, क्योंकि अमेरिका में हुए ऐसे आयोजन से भी ज्यादा यानी दोगुने देशों ने भारतीय नौसेना की मेजबानी स्वीकार की थी। और उस वक्त दूरदर्शन ने पहली बार सागर के मध्य से मल्टी कैमरा यूनिट से सीधा प्रसारण कर एक इतिहास रचा था, वो भी तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज जी की मौजूदगी में। लाइव टेलीकास्ट इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों के करीब 80 जहाजों की समीक्षा की जानी थी। यानी एक तरफ मुंबई में समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाते जहाज थे, तो दूसरी ओर गेटवे ऑफ इंडिया और नौसेना का फ्लीट हेडक्वार्टर। दूरदर्शन ने 12 कैमरों और 8 माइक्रोवेव लिंक की मदद से इस असंभव काम को संभव कर दिखाया था और इसे इतिहास बनते देखा देश और दुनिया के करोड़ों दर्शकों ने। भारतीय गणतंत्र की अर्धशताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित नौसेना का ये निरीक्षण हमारे गणतंत्र की अब तक की सफल यात्रा के अभिनंदन का प्रतीक है। दुनिया के 19 देशों के 24 जलयान इस अंतर्राष्ट्रीय बयान निरीक्षण में भारत की नौसेना के निमंत्रण पर भारत आए हैं। कुल 83 यान लहरों पर हैं, इसमें से 79 रिव्यू के लिए होंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में हुए सहस्राब्दी फ्लीट रिव्यू में भाग लेने वाले देशों से दुगने देश इस रिव्यू में भाग ले रहे हैं। और ये जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह INS विक्रांत है, जिसे कुछ साल पूर्व नौसेना से अलग किया गया था। एक शानदार इतिहास रहा है इस यान का। इसके नेतृत्व में भारत ने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जीती भी। जैसा कि सब दर्शक देख रहे हैं, दूर तक आज विभिन्न नौसेनाओं के जहाज अपनी पूरी चमक दमक के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी जगहों पर खड़े इन जहाज़ों की आन बान शान देखते ही बन रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मौसम भी हमारे साथ है, ना ही धुंध है ना ही स्मॉग, और आप देख सकते हैं इन जहाज़ों की लंबी श्रृंखला। इस श्रृंखला में शामिल हैं 45 भारतीय नौसेना के जहाज,
और 24 विदेशी नौसेनाओं के युद्धपोत। Srimati Sushma Swaraj, along with the various dignitaries here present at the jetty, which is known as the South Breakwater. This, of course, is a momentous and emotional event, not only for the Indian Navy but for the entire nation, where this live telecast is being beamed to you, as also on DD International. This telecast is being done with the aid of 12 cameras and 8 microwave links. 5 of the cameras are on 5 of the ships. The INS Sukanya, the presidential yacht, which will of course carry, I can just see Air Chief Marshal A.Y. Tipnis there at the background. And now coming into view is the Mumbai Harbour. In fact, a few hundred yards behind this to the left is the South Breakwater or the jetty, where stood the original dockyard and through which passed mighties such as Lord Clive, Nelson when he was a midshipman, and the Duke of Wellington when he was Sir Arthur Wellesley. And through these port trails have watched and walked some of the finest Indian admirals, and this of course is the home of the Western Naval Command. This is the position which has a lot of history, a history which the Indian Navy goes back to 1612. The microwave links, 8 of them, 5 on the ships, the Virat, Alapi, Jyoti, Varaha and Vindagiri. And remember, at some point of time, this of course is the headquarters of the Western Naval Command, the Fleet Office, where we have 2 of our cameras positioned, as also a microwave link. 8 microwave links, 12 cameras, and this live telecast of the International Fleet Review 2001, going to the length and breadth of this nation, where as many as 79 warships would be reviewed by His Excellency K.R. Narayanan, the Honorable President of India. Arriving now, the Honorable Prime Minister of India, being received by Sri George Fernandes, the Honorable Defence Minister, a warm handshake, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, Admiral Madhvendra Singh, Flag Officer Commanding Western Naval Command. राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं सुकन्या की ओर, जिस यान पर बैठकर उन्होंने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़े का निरीक्षण करना है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सेनाध्यक्ष, पश्चिमी कमान के प्रमुख और हमारे रक्षा मंत्री राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडिस, एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, अपने सर्वोच्च सेनापति का स्वागत। भारत का राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के सर्वोच्च सेनापति हुआ करते हैं। राष्ट्रपति नारायण 8वें राष्ट्रपति होंगे जो इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं। Well, while the presidential yacht INS Sukanya is cast off with the others in tow, Suvarna, Pondicherry and Bhavnagar, these 4 ships will pass through 7 rows of ship at anchor. As the last but one is reviewed, the mobile column of 10 ships will steam past the president, and we'll then have the fly past. But let's go back to the history of the Indian Navy, which dates back to 1612, when the first squadron of battleships arrived with the East India Company. It was renamed as Her Majesty's Indian Navy in 1830, and in 1934 reorganized and rechristened as the Royal Indian Navy. तो भारतीय नौसेना की ये जो गौरव गाथा है, इससे जुड़े तमाम दस्तावेज, तमाम जो वीडियोज हैं, आप प्रसार भारती आर्काइव्स पे जाकर आज भी देख सकते हैं। और इसी के साथ डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।